हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज स्टार्ट कर कौन ना नवम श्रेणी हॉलिडे होमवर्क रो इंग्राजी रो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ता पूर्व चैनल रे जो माने भी नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दियंतु। ता द्वारा कोन होबो ना जेतेबेले मु वीडियो टी अपलोड करिवे तुम निकट रे सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंच जिवो। बुझी होची? सो देरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करवा। तो देखो इंग्लिश रे देइछि प्रथमे व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। लेखक रेस्टोरेंट रे कोन एक्सपीरियंस करिथिले। ओके, ता लिखिबो द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एट लंच टाइम। द रेस्टोरेंट वाज very crowded with people eating and drinking. He noticed that some chairs and tables had been pushed into a corner. He chose a corner table, sat there for lunch, and started skimming through a newspaper. Clear? Next question jiba. What made the author to tell a lie about the ring? तो देखिए आंसर्स। द ऑथर टोल्ड ए लाई अबाउट द रिंग। लेखक मुदी विषय रे मिछ कथा कहिले कारण बिकॉज Maggie repeatedly requested him to tell her sick mother, Mistress Betty, that her son Frankie was alive and well in India. The author hoped that this would reduce her anxiety and help her recover from her illness. Therefore, he lied about the ring for Mistress Betty's happiness and recovery. Clear? Next, chiba 3 number. Why the Shilling magic presented to the writer was an invaluable offering. Now लिखिबो the Shilling given to the writer was an invaluable offering because it was presented with deep love, gratitude and affection by Maggie and her mother. Though the coin itself had little monetary value, it symbolized their sincere feelings and thankfulness towards the writer for bringing them comfort and happiness. Clear? Next question jiba. Imagine you are student of class IX. Write an application to the headmaster to arrange a to arrange a friendly football match with class X student after reopening the school. कौची लिखिबो टू द हेडमास्टर तो स्कूल ना लिखिबो। सब्जेक्ट में लिखिबो प्रेयर फॉर अरेंजिंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच विथ क्लास एक्स स्टूडेंट्स। लिखिबो सर वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास IX beg to state that we are very interested in sports and games. After the reopening of the school, we would like to play a friendly football match with the students of class X. Such a match will develop sportsmanship, teamwork, and friendly relations among the students. We therefore request you kindly arrange a friendly football match between class X and class IX students at a convenient time after the reopening of the school. We shall remain grateful for your kind consideration. Yours obediently, the student of class IX. डेट लिखिबो। ओके, तापरे तुम सिग्नेचर मारिबो। नेक्स्ट जीवा 5 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 5 पर्यंत पार्ट ऑफ सेंटेंस रो एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 5 करो। देखो पार्ट ऑफ सेंटेंस देछि एक्टिविटी 1 टा देछि कुछ देयर आर सम वर्ड्स इन टेबल्स A and B. You have to join them suitably by drawing a line. से मानकर लाइन द्वारा कौन करिवो जॉइन करिवो जोटा कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन हे परिवो। देन राइट द कंप्लीट सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। जेतेबेले से हे जिवो कोन ताकू मध्य लगै दबो माने गोटे सेंटेंस लिखि दबो जेमति कि द बॉय इज इंटेलिजेंट, द चाइनीज इज very industrious, दिलीप टर्की इज पॉपुलर हॉकी प्लेयर, trees provides us oxygen, the cows feed on grass। एतबो लिखि दबो। इट अछि सब the Chinese are very industrious, Dilip Turkey is a popular hockey player, trees provide us with oxygen, the cows feed on grass। Okay,
ये सरला बर्तमान जीवा एक्टिविटी 2 जीवा put the words in the correct order the first one has been done for you बोला correct order लिखिबो प्रथमटा देई देछि सेकंड टू जीवा he is song listening this is to not एला लिखिबो कोन he is not listening to this song थर्ड नंबर देछि थर्ड नंबर आंसर कोन हबो I have not cooked for you 4 नंबर आंसर हबो he is a tall boy 5 नंबर जीवा गांधीजी is the father of our nations 6 नंबर आंसर हबो when do you get up 7 नंबर क्वेश्चन जीवा all that glitters is not gold 8 नंबर Anima is singing so sweetly 9 नंबर can you guess the answers 10 नंबर जीवा look at the suns ओके वर्तमान जीवा 3 नंबर कुछ नाउ राइट 6 सेंटेंस यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बोल कला 6टा सेंटेंस लिख ए जो गिवन जो आंसर फादर ना एज सिस्टर से लिखियो बुझी होची देखो केम लिखियो दिस इज श्रीनिवास मिस्टर सुभाष चंद्र इज हिज फादर ही इज 15 years old हिज सिस्टर इज ए सिंगर ही इज नॉट एन अर्ली राइजर हिज हॉबी इज स्विमिंग ओके ये वाला नेक्स्ट जीवा एक्टिविटी 4 देछि रीड द एबव डायलॉग एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट द रोड मैप आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिक्ट्स को जो सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट्स की चिंता करबा भीतर 8 जो ए जो इंस्ट्रक्शन देछि स्टॉप डोंट मूव सॉरी हेल्प मी ए दुरु कोन करियो सब्जेक्ट की प्रेडिक्ट के देखियो सब्जेक्ट लिखियो यू अंजला अंडरस्टूड देछि स्टॉप डोंट मूव एतरे कोन सब्जेक्ट होछि यू हेल्प मी अ बिट प्लीज आई होछि सब्जेक्ट प्रेडिक्ट होछि कैन हेल्प यू यूटा होछि सब्जेक्ट टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल होछि प्रेडिक्ट सेम आई सब्जेक्ट विल ड्रॉ ए रोड मैप फॉर यू एटा होछि हमर कोन प्रेडिक्ट यूटा सेम दे एठी go straight along the NH up to Joydev Barrett होछि predict यूटा होछि सब्जेक्ट turn left होछि predict यूटा होछि सेमति सब्जेक्ट take the नंदनकानन रोड होछि predict यूटा होछि सेमति सब्जेक्ट predict के turn right at नालको छक एटा सेमति सैनिक स्कूल सा होछि कोन एटा होछि सब्जेक्ट एटा होछि कोन comes on the left एटा होछि predict सेमति एटा होछि आई होछि सब्जेक्ट थैंक यू very much sir eta hochi predicts okay buji parla next question activity 5 now let us 5 sentence to explain the road map to Swati who wants to go to the Baleshwar Jilla school from police line square okay sentence likhiyo table bhabare likhiyo go up to the station square turn right from the station square go straight along the road you will see the statue of Eskundus on your left then you will reach the gate of Jilla School Baleshwar clear ए भले भाबे लिखि परिबो ओके तापरे नेक्स्ट देछि मेक ए फैमिली ट्री डायग्राम एंड फोटोज ऑफ योर फैमिली एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट फैमिली ट्री जानि परछ माने ओटो गच्छ भलिया हेतिबो एमति गच्छ देइ दबो एथिरे तुम फैमिली वाला फोटो एठी तुम फोटो एठी तुम फोटो एठी बापा फोटो एठी मां फोटो एठी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर सिस्टर ए भली कोन गच्छटे करी की सेतरा कोन सब फोटो मते हम कोन कहउछे फैमिली ट्री बोली कहउछे बुझी पाइलो एते के थिला संपूर्ण प्रश्न उत्तर आशा करूची आपण मानक ए वीडियोटी भल लागि थिबो जदि आपण मानक ए वीडियोटी भल लागिची निश्चित भाव में वीडियो को लाइक कर चैनल को शेयर कर और सांग मान सहित सब्सक्राइब थैंक यू सो मच।